Welcome to you all, my dear students. As we are going through the chapter The Industrial Revolution, today we are going to discuss the steam power, canals, and the railways. So, students, let's begin the topic. First of all, we will talk about the steam power. Steam power, with the realization that steam could generate tremendous power, was decisive to large scale industrialization. And before it, water as hydraulic power had been the prime source of energy for centuries. So, students, as the people were aware about the steam power that helped to boost up the industrialization, and before it, they generally used the hydraulic power, which was a source of energy for the centuries, but it was not constant. Not constant in the sense that it depends on the area, it means the region, depend on the flow, weather, and other important things. So this is one of the major drawback of this water as a hydraulic power. When the steam power had been introduced, it provided pressure at high temperature that enabled the use of broad range of machinery. Steam power was first used in mining industries. As जो माइन हुआ करते थे, माइंस को जब डीप उसे खोदा जाता था तो ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे फ्लड आ जाना, और इस फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, उसको ड्रेन आउट करने के लिए वहाँ के वाटर को, थॉमस सेवरे ने एक मशीन बनाई, और दिस मशीन वाज नोन एज द माइनर्स फ्रेंड. हियर यू हैव द फिगर ऑफ द माइनर्स फ्रेंड दैट हैड बीन मेड इन ईयर 1698. बट देर वॉज अ ड्रॉबैक ऑफ दिस कि जब भी इसे डीप लेके जाके इसे वर्क लेना चाहते थे तो ये सही से काम नहीं करता था, और इसका जो बॉयलर होता था वो बस्ट कर जाता था. और इसको थोड़ा सा एडवांस करने की कोशिश करी थॉमस न्यूकॉमन ने in 1712, and this machine had a major defect of the losing energy due to continuous cooling of the condensing cylinder. तो यहाँ पे भी इसकी एक ड्रॉबैक रही है. Generally, the steam engine had been used only in coal mines until James Watt developed his machine in 1769. And this is the time period when he converted the steam engine from a mere pump into a prime mover. अभी तक जो स्टीम पावर का यूज हो रहा था वो एक पंप के तौर पे हो रहा था, जो कि फ्लड वाटर को ड्रेन करने के पर्पज से यूज हुआ था. पर जेम्स वॉट के बाद जब इन्होंने इसे इन्वेंट किया तो इस मशीन को एज ए मूवर इन्होंने डेवलप किया, और इसी से फिर आपकी आगे चल के ट्रेन्स डेवलप हुई, डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन्स डेवलप हुई जो इंडस्ट्रीज में यूज हुए. एंड बाय द एंड ऑफ 18th century, वर्ड्स स्टीम इंजन वाज बिगिनिंग टू रिप्लेस हाइड्रोलिक पावर. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द कैनल्स एंड द रेलवेज. तो कैनल्स की अगर हम बात करते हैं तो इनिशियली दीज वर दी major source of transport, and generally they used to transport the coal to the cities. And these canals had been generally made by the big landowners. कैनल्स बनवाना सभी लोगों के बस की बात नहीं थी, तो जो बड़े बड़े लॉर्ड्स हुआ करते थे वही लोग इसे कैनल्स को बनवाते थे. और इसके पीछे जो उनका ऑब्जेक्टिव था वो था कि उनकी जो माइंस थी, जो क्वेरीज थी, जो फॉरेस्ट थे, उनकी वैल्यूज़ को इंक्रीज करना. वैल्यूज़ कैसे इंक्रीज होता कि वो इसी के आधार पे वो अपने जो रिसोर्सेज थे उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते थे, क्योंकि जो कैनल का ट्रांसपोर्टेशन था वो चीपर था और इजी था, क्योंकि अभी तक रेलवे इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था. और यहाँ पे एक एग्जांपल है, द मेकिंग ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश कैनल वाज द वर्सलेस कैनल दैट वाज कंस्ट्रक्टेड इन ईयर 1761 बाय जेम्स ब्रिंडले. When we talk about the city of Birmingham, it is one of the good example that grow its position at the heart of a canal system that connecting London. And from 1716 to 1790, 25 new canal building projects were begun. और ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसको नाम दिया गया कैनल मेनिया.
क्योंकि 1788 to 1796 का टाइम पीरियड है. एंड देयर वर अनदर 46 न्यू प्रोजेक्ट्स वर इंट्रोड्यूस्ड एंड ओवर द नेक्स्ट 60 years more than 4,000 miles of canals were built in England. Or through this we can easily identify that the canals were one of the major source of transportation at that time before the introduction of the railways. So students, let's find out about the railways. The first steam locomotive, Stephenson rocket, appeared in year 1814. And the invention of the railways took the entire process of industrialization to a second stage. इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो सेकेंड स्टेज है, सेकेंड स्टेज का मतलब कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का डेवलपमेंट बहुत तेजी के साथ देखा गया, वो देखा गया रेलवे के इंट्रोडक्शन के बाद. क्योंकि अब गुड्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैरी करना ज़्यादा ईजियर हो गया और हैवी गुड्स भी आसानी से कैरी किया जा सकते थे. क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो वाटरवेज के लिए भी कहीं ना कहीं रोडवेज का एक कनेक्शन चाहिए. और रेलवे के आने के बाद इसको कम करने की कोशिश की गई कि जहाँ से भी प्रोडक्ट माइन से या जहाँ से भी प्रोडक्ट को निकाला जाता था उसको सीधे इंडस्ट्रीज तक इजीली भेज दिया जाता था और इंडस्ट्रीज से डायरेक्टली कहाँ पे, मार्केट में. और इसमें एक जो अगला जो स्टेप है वो है रिचर्ड ट्रेविथिक का पफिंग डेविल. और पफिंग डेविल इतना मजबूत था कि दैट कैन पुल ट्रक्स. ये इसकी बिगिनिंग थी. अभी तो रेलवे कई ढेर सारे ट्रक्स खींच सकता है एक साथ, पर when we talk about the beginning, it was one of the great achievement by this Richard Trevithick. And in 1814, the railway engineer George Stephenson constructed a locomotive called the Blucher. Could pull a weight of 30 tons up a hill at 4 miles per hour. George Stephenson is also known as the father of railway. So you have to remember this person, father of railway, George Stephenson. And in the 1830s, the use of canals revealed several problems. Like अब 30 का टाइम पीरियड आया तो जब रेलवे का अब फ्लो बन गया तो कैनाल्स को लेके कई सारी प्रॉब्लम्स थी जिनको अब लोगों को समझ में आने लगी. जैसे कि कंजेशन ऑफ वेसल्स. इतने बिजी रूट्स थे कैनाल्स के कि वहाँ पे जो शिप्स होते थे छोटे छोटे, उन सब का जो है जाम लग जाता था. फ्रॉस्ट, फ्लड और ड्रॉट प्रोवाइड द लिमिटेड टाइम ऑफ देयर यूज. ये भी एक मेजर प्रॉब्लम थी. So that's why the people prefer the railways. Now the railway appeared as a convenient alternative against this canal transportation system. And with the time period, about 6,000 miles of railway was opened in Britain between 1830 to 1850. Most of it in two short bursts. First is during the Little Railway Mania, that was from the time period 1833 to 37. Approximately 1400 miles of lines was built. ये पहला रेलवे मेनिया और जो दिस इज नोन एज द लिटिल रेलवे मेनिया. और जो सेकंड है वो है बिगर रेलवे मेनिया, दैट वाज ऑफ द 1844 टू 47. और इसमें जो है 9500 माइल्स का जो लाइंस बिछाने का काम जो है वो सैंक्शन हुआ. और ओवरऑल इफ वी टॉक तो वी फाइंड दैट ड्यूरिंग द 1850 railway had been expanded throughout the England. Means all the major cities or the ports or the areas that had been connected with the railways. And this railway played an important role to grow up the industrialization. Students, here are some questions. Let's find out. Question number 1, who was Thomas Newcomen? So you have to mention that who was the Newcomen and what was his achievements. And what machines he had made and what were the drawbacks. Second is what was the contribution of canals to the proliferation of London as a center of trade. In the sense that you have to mention that the importance of canals as a mode of transportation and how it helped the industrialization. Third is who rightly described as father of railways. So these are the 3 questions which you have to do in your notebook. Thank you and have a nice day.